Bonjour, I'm Hina from evidyarthi.in and in this session we'll learn the article construction. What are article construction? Article construction are formed when we add a preposition with the definite masculine article or female definite article or vowel or plural. So we form the article construction when we add a preposition to the definite article. So preposition, there are two preposition in article construction. First is a and second is the. We'll start with preposition a. So preposition a, article construction तब बनता है हमारे पास जब हम एक preposition को article definite में प्लस कर देते हैं, उसको shrink कर देते हैं, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. हमारे पास दो प्रीपोजिशन है आर्टिकल कंस्ट्रक्शन में, अ एंड द. सो प्रीपोजिशन अ विच मीन्स टू, इन और एट इन इंग्लिश. जहां पर हम टू, इन और एट यूज करते हैं वहां पर हम प्रीपोजिशन अ यूज करते हैं फ्रेंच में. हमारे पास चार फॉर्म है, फेमिनिन, वोवल और म्यूट एच और मेस्कुलिन एंड प्लूरल. जैसा कि आपको पता है हमारे पास फ्रेंच में चार फॉर्म होती है, मेस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल और सिंगल. सो यहाँ पर भी हमारे पास चार फॉर्म्स है. वी हैव फोर फॉर्म्स, मेस्कुलिन, फेमिनिन, वोवल और म्यूट एच एंड प्लूरल. So these are the four form, and before you use article construction you just have to remember the all four form of these article construction. In feminine we have preposition a and definite article la. So definite article la कब होता है? जब उसमें feminine हो. जब noun, जब item feminine होता है तब हम la use करते हैं. When a noun or an item or a thing or an object is feminine, we use the la, definite article la. So a plus la will form ala. A plus la will form ala. So this is the formula to form the article construction. So a plus la will form ala. Then before a vowel or mute h. H is silent. H is a vowel in French and it remains silent. So before a vowel or a mute H, a plus L apostrophe. A plus L apostrophe. A and L apostrophe. Next we have the masculine. So masculine we have a plus la. A plus la which form on. On. Please remember there is no such form in French. A plus la form of this is not exist in French. Next we have the plural. For plural we have a plus les, a plus les and that form on. O and on. So there is no such form in French. ये दोनों कोई भी फॉर्म नहीं है फ्रेंच में. जहां पर मेस्कुलिन होता है हम वहां पे au यूज करते हैं और जहां पर प्लूरल होता है हम वहां पर aux यूज करते हैं. नाउ वी हैव सम एग्जांपल. Je veux à l'école. Je veux à l'école, which means I go to the school. So a and L apostrophe is to the. The meaning of a and L apostrophe is to the. And wo is form of aller, which means to go. So je is I. So I go to, l'école is school. So I go to the school. This is for the vowel, the vowel form of a and L apostrophe. Now we have je veux à la maison. Je veux à la maison. Je means I. Veux is again form of aller, which means to go. À la
and maison. This is the feminine form. The feminine form of article construction. So, I go to the house. I go to the house. Maison is a feminine word which means house in French. So, I go to the house. Je vais à la maison. Next we have is je vais au restaurant. Je vais au restaurant. Here we use the form a plus les, which form un. And restaurant, we know it's restaurant. So, je vais au restaurant means I go to the restaurant. Next we have is je vais au toilet. Je vais au toilet, which means I go to the toilet. Toilet is a word which is plural in French. It is not like toilet is a word which is plural in French, but English में ऐसा कुछ नहीं होता है. But French में toilet is a plural word. So we use the AUX. So je vais au toilet, which means I go to the toilet. So all these are the example of construction, article construction, preposition un. Is that clear? And next we have preposition de. Preposition de, which means of or from in French. So preposition de जब यूज होता है जब हम of और from में यूज करते हैं. So there are 4 versions of using preposition with article constructive. Just like feminine, before a vowel or mute h, masculine और the plural. तो हमारे पास 4 तरीके हैं जहाँ पे हम आर्टिकल कॉन्स्ट्रक्शन यूज करते हैं. फर्स्ट आता है फेमिनिन, देन मैस्कुलिन, देन वॉवल एंड प्लूरल. तो आपको ये 4 तरीके पता होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल कॉन्स्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्लस आर्टिकल डेफिनेट. सो विद फेमिनिन वी हैव द प्लस ल is dilla. The plus la is dilla. Next, before a vowel or mute h. H is a vowel in French and it remains. H is a vowel in French and it remains silent. So we have the plus l apostrophe is the and l apostrophe. Next is masculine form. For that we have the plus la is do. Do. And the plural form, the plus lay is equal to days. So we have the 4 form which is dela, d, l apostrophe, don and days. So all are the form of article construction in preposition de. For example, we have je viens de la maison. Je viens de la maison. So, de la maison means from the. And viens is a verb which means to come. So, je viens de la maison means I come from the house. Maison is house. Je means I. So, I come from the house. This is the feminine version of preposition de plus article construction. Next we have je viens de l'hôpital. Je viens de l'hôpital. Here we use the de plus l apostrophe. De plus l apostrophe because h is a vowel in French. So, je means I, l'hôpital is the hospital, and viens is to come. So, I come from the hospital. Je viens de l'hôpital. Next, je viens d'un pain. Je viens d'un pain, which means I want some bread.
bread is pe, and the masculine version, so we use du. V plus le will become du, and wo means want, je means I. So the preposition plus the article definite can be any or some. तो जहां पर हमारे पास any और some हो, वहां पर हम आर्टिकल डेफिनेट और preposition the प्लस करके यूज कर सकते हैं. So all these are the example of preposition the with article construction. If you want to revise all this example once again, you can download from the link below. If you have any question, if you have feedback, you can write in the comment section below. Thanks for watching the video. Merci, à bientôt.